डॉक्टर भावना मैडम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सबसे पहले तो मैं आपके विभाग का मैं धन्यवाद अदा करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ बोल सकूं। मानव संसाधन विकास केंद्र व पंडित दीनदयाल विश्वविद्यालय संलग्न समाजशास्त्र विभाग द्वारा 30 मार्च से 5 अप्रैल 2022 के शॉर्ट टर्म कोर्स का आयोजन किया गया। कोर्स ऑनलाइन द्वारा संचालित किया गया, जिसका लाभ मैंने लिया, अदरवाइज मैं ये कोर्स से नहीं जुड़ पाती। उद्घाटन से लेकर समापन तक बहुत ही प्रणालीगत आयोजन, ऑनलाइन क्लासरूम में भी अनुशासन बनाए रखा। मैं यह जरूर कहना चाहूंगी कि मेरा अनुभव बहुत ही सुखद और रुचिपूर्ण रहा। ऐसा विश्वास करती हूँ कि सभी प्रतिभागियों का भी जिज्ञासा संतुष्ट हुई होगी और मेरे मत में शामिल भी होंगे। समाजशास्त्र विभाग की अध्यक्ष व समन्वयक मैडम संगीता पांडे जी तथा उनके सभी सहयोगियों का भी मैं आभार प्रकट करती हूँ, एवं डॉक्टर मनीष पांडे जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने बड़ी कुशलता से इस शॉर्ट टर्म कोर्स का संचालन किया और हमको इस कोर्स में जकड़े रखा और हमें नियमित रूप से इस कोर्स में बुलाते रहे ताकि हम हाजिर रहे। धन्यवाद मनीष जी। अंत में तकनीकी कार्यों से जुड़े सभी सहयोगियों का तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहायक सभी लोगों का मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद प्रकट करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। थैंक यू। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स के रूप में डॉक्टर महांती प्रसाद यादव जी, आप डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी मोतीलाल नेहरू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं। पूरे सेशन के दौरान आप सिर्फ सेशन को सुनते ही नहीं थे, बल्कि हर एक सत्र में उनकी क्वेरीज भी आती थी और उनके एक वो ऑब्जर्वेशन करते रहते थे और अपना कमेंट भी देते थे। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने अनुभव साझा करें। सर, आवाज मेरी पहुंच रही है क्या? जी बिल्कुल। स्वागत स्वागत है सज्जनवर, स्वागत हो स्वीकार। स्वागत स्वागत है सज्जनवर, स्वागत हो स्वीकार। बड़े भाग्य जो आप पधारे, पूर्ण मनोरथ आज हमारे। हृदय गले से स्वागत करते, स्वागत हो स्वीकार। नेत्र विज्ञान हमको समझे, हृदय गले से स्वागत करते। नेत्र विज्ञान हमको समझे, हृदय गले से स्वागत करते, स्वागत करते, स्वागत हो स्वीकार। रेडियो गोरखपुर यूनिवर्सिटी में तमाम बैठे और देश से सभी कोने कोने से जुड़े हुए सभी को मेरा प्रणाम। और विशेष तौर पर संगीता मैम, मनीष सर, क्योंकि इन लोग के आयोजकों के वजह से हम लोग जुड़ पाए हैं। मैं 2, 3, 4 बात ही कहूंगा क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए संक्षिप्त में अपनी बात रखनी है। पहली बात तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमें इतना अच्छा मौका दिया, और उससे भी ज्यादा धन्यवाद हम सबके एक मित्र जुड़े हुए हैं, संजय अग्रवाल जी, जो कि वाराणसी से, उन्होंने मुझे पर्सनली लिंक भेजा कि आप इसको ज्वाइन करिए, क्योंकि हम लोग अभी प्रयागराज में रिफ्रेशर कोर्स समाप्त ही किए थे 26 तारीख को। तो मैंने उनसे पूछा आप कौन है, क्योंकि नंबर सेव नहीं था। उन्होंने कहा कि आपने 14 दिन में हम लोग के मन को जीत लिया। तो मुझे खुद नहीं समझ में आया कि मैंने कैसे जीता। खैर, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। कभी भी अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, अधिकार के लिए स्वयं ही परिश्रम और मेहनत करनी पड़ती है। महोदय, मैंने इस शॉर्ट टाइम कोर्स में यह तो अवश्य सीखा कि आपको कहीं भी कुछ अगर करना है तो आप स्वयं कर सकते हैं। उसका एक ही तरीका है कि स्वयं अपना विश्वास आप बना कर, और एक शिक्षक का एक कर्तव्य भी है कि अपने
प्रति और जहां भी आप जुड़े हो उसके प्रति अगर ईमानदारी से आप काम कर रहे हैं तो अतः ही आपको स्थान मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर लाना चाहूंगा। शुरू में मैं थोड़ा सा घबराया जब जिस दिन मनीष सर बोले कि आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। मैं इसलिए बात बता रहा हूं क्योंकि उस दिन से मैं, हालांकि वैसे मैं एक्टिव रहता हूं, लेकिन फिर भी मुझे, क्योंकि मैं, जैसा कि मैंने बताया भी है बात में एक दो बार, कि मैं दिव्यांग जरूर हूं पर मैं उसे किसी भी काम में आड़े नहीं आने देता कि मैं दिव्यांग हूं तो ये काम मैं नहीं कर सकता। एक्सक्यूज नहीं चाहिए, मुझे मेहनत चाहिए, परिश्रम चाहिए, मुझे दया नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए। तो खैर, जब मनीष सर बोले कि अगर आप लोग पंचुअलिटी में नहीं रहेंगे तो सर्टिफिकेट रुक जाए, तो मेरा दिल थोड़ा सा लगा कि यार कहीं मेरा ही तो नहीं रुक जाएगा। क्यों? इसका वजह यह है कि कई बार नेट तमाम सारे दिक्कतें रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने प्रयास किया। लेकिन मनीष सर का बहुत स्नेह मिला और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, अगर कोई भी ऐसी टेक्निकल इश्यू आएगी तो हम आपसे संपर्क कर लेंगे। और उस दिन से कंटिन्यू मैंने पूरे सत्र को सुना, कोई भी सत्र मैंने प्रयास किया कि मिस ना हो। और देखिए, हम एक शिक्षक होने के नाते एक हमारी जिम्मेदारी है कि हम चीजों को सुने। अच्छा, मेरी आदत, क्योंकि मैं देख नहीं पाता, इसलिए मैं सुनने में ही सारा विश्वास करता हूँ, सुन करके ही नोट करता हूँ। जो भी मैंने पूरे सत्र के समरी भी बनाए हैं, जब समरी अपलोड होगा तो भी उसमें भी मैंने बहुत सारे कुछ जिक्र किए हैं। तो शॉर्ट में मैं ये कहना, यहाँ आकर के बेशक हम कहते हैं कि समाजशास्त्र, साइकोलॉजी, तमाम विषय विभाग, लेकिन संगीता मैम का जो मात्र तुल्य प्रेम हम लोगों को खींचे रखा इस ओर, इसको मैं शब्द में नहीं बयां कर सकता। इसके लिए मेरे पास शायद शब्द भी कम पड़ेंगे। संगीता मैम ने शुरू से लेकर और अंत तक हम लोग का जो हौसला बना के रखा, इसके लिए रेडियो पूरे परिवार को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है कि मैंने थोड़ा 1-2 मिनट ज्यादा ले लिया, लेकिन क्या कहा जाए, एक शिक्षक का ये कर्तव्य होता है, जब कोई बात शुरू करता है तो जल्दी रुकने नहीं, समय है का नाम ही नहीं लेते, पता नहीं क्यों। वही मेरी भी आदत है, माफ कीजिएगा अगर मेरी बात अच्छी लगी हो। बहुत बहुत आप सबको बधाई, बहुत बहुत। मैं चाहूंगा कभी और भी आप लोग अगर मौका देंगे तो मैं अवश्य आप सबके साथ जुड़ूंगा इसी शब्दों के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा, सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद सर, शुक्रिया। धन्यवाद डॉक्टर महांती प्रसाद यादव जी। और मैं आप लोगों को ये बात भी बताना चाहूंगा कि ये कोर्स इस वजह से हो पाया क्योंकि हमारे डायरेक्टर प्रोफेसर रजनीकांत पांडे सर का विशेष स्नेह समाजशास्त्र विभाग को मिलता रहता है बराबर, और उन्हीं के आशीर्वाद से और सहयोग से ये कोर्स लगातार रिसर्च मेथोडोलॉजी पर समाजशास्त्र विभाग ने एक रिफ्रेशर कोर्स और जिसके बाद शॉर्ट टर्म कोर्स कराया है। तो उनके प्रति सबसे ज्यादा आभार बनता है क्योंकि सारे कोर्स के सूत्रधार और गाइडेंस उन्हीं का मिलता रहा, जिनके हम लोग मार्गदर्शन में चल के इस कोर्स को आगे बढ़ाए हैं। किसी और पार्टिसिपेंट्स को भी अपना व्यू देना हो तो समय हमारे पास है। मनीष जी, मैडम 5 मिनट में जुड़ रही हैं। ठीक जी, तो कोई पार्टिसिपेंट हो अगर अपने 2-3 मिनट में अपनी बात पूरी कर सके। डॉक्टर अनामिका सिंह जी। जी मनीष जी, मैं सबसे पहले तो समाजशास्त्र विभाग को धन्यवाद देना चाहूंगी। और जैसा कि अभी आपने कहा, ये बात सच है कि किसी भी कोर्स के को कोऑर्डिनेट करने में जो भूमिका उसके मुख्य व्यक्ति की होती है, जो कि इस समय हमारे डॉक्टर रजनीकांत पांडे सर निभा रहे हैं, वो शायद किसी और की नहीं होती, क्योंकि हम लोग उन्हीं की गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो मैं सबसे पहला धन्यवाद डॉक्टर रजनीकांत पांडे सर को देती हूँ कि जिन्होंने हम लोगों के लिए सोचा कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में कोई कोर्स कराया जाए। फिर दूसरा धन्यवाद मैं संगीता मैम को देती हूँ कि उन्होंने डे 1 से हम लोग के लिए अच्छे से अच्छे जो रिसोर्स पर्सन है उनको बुलाया। और रिसर्च मेथोडोलॉजी में कई सारे टर्म्स ऐसे थे, मैं झूठ नहीं कहूंगी, जो सच में मुझे पता भी नहीं थे, मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था। लेकिन जब मैंने वो क्लासेस की, वो पूरे लेक्चर सुने, तो आप कह सकते हैं कि बहुत सारी नई नई चीजें मुझे सीखने को मिली। इसके लिए मैं मैम को भी धन्यवाद देती हूँ। और मैं उम्मीद करूंगी कि आगे जब कभी भी आप लोग कोई भी रिफ्रेशर कोर्स या शॉर्ट टर्म कोर्स जब भी कराएंगे, मैं ऑफलाइन फिर से आप लोगों के पास आना चाहूंगी, क्योंकि ऑनलाइन तो मैंने शॉर्ट टर्म कोर्स भी आपके यहाँ से किया, एक रिफ्रेशर कोर्स भी ऑलरेडी कर चुकी हूँ। आप लोग का जो स्नेह है वो हमेशा मिलता रहा है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि आप लोग हमारे लिए चीजों को सरल करते हैं। अनुशासन मेंटेन करना वास्तव में एक बहुत बड़ी चीज है, वो आप लोग ने की भी, लेकिन आप लोग हम लोग को दिशा भी दिखाते हैं कि किस तरीके से हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं।
तो आप लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आपकी पूरी जो टीम है, जो पूरा समाजशास्त्र विभाग है, जिसमें आपके साथ अन्य लोग भी हैं, उन सभी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, और जो टेक्निकल टीम से जुड़े हुए लोग हैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और अगेन आपको और संगीता मैम को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इससे जुड़ने का अवसर प्रदान किया। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मनीष। थैंक यू मैम, थैंक यू। अनामिका जी, आपने क्या के पर्पस हम लोग का सॉल्व कर दिया कि एक कतरा ज्ञान का भी अगर यहाँ से आपको मिल गया तो हम लोग का सफल हो गया कार्यक्रम। मैम सच में मैंने बहुत कुछ सीखा, मुझे वाकई भी नहीं पता था। और जब मनीष जी की कॉल आई कि मैम शॉर्ट टर्म कोर्स है और प्लीज आप ज्वाइन कीजिएगा, तो मैंने उनसे कहा अच्छा ज्वाइन कर लूंगी। लेकिन उसी समय एग्जामिनेशन ड्यूटी वगैरह लगी, तो मैं थोड़ा सा डिलेमा में पड़ गई कि ज्वाइन करूं या ना करूं। अपने प्रिंसिपल सर से बात की तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ जरूरत होगी वहां हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो उन्हीं सबकी वजह से मैम और आप लोग के सहयोग से ज्वाइन हो पाया, और इतनी अच्छी अच्छी चीजें और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें सीखने को मिली। अनामिका जी, अरे मैम धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए, नहीं, सच में बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं बहुत पर्सनली मैम आप लोगों को जो है एक थैंक यू नोट लिख के भेजने वाली हूँ कि आपने मुझे इतनी अच्छी चीजें सिखाई जो मैंने इतने सालों में नहीं सीखी। जी कोई कमी रह गई हो तो वो भी बताएं। मैम कमी तो कोई नहीं थी, किसी एरिया में आप और चाहते थे अगर कुछ? नहीं मैम एरिया तो आप लोगों ने ऑलमोस्ट सारे कवर किए। कमी हम लोगों की तरफ से थी, हम टीचर्स की तरफ से, जो हम लोगों ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, माइक अनम्यूट रह गए, हम बात कर रहे हैं, वो सारी चीजें तो हमारी तरफ से थी। आपकी तरफ से तो कोई भी कमी नहीं थी, बल्कि आपने तो हमें बेहतरीन से बेहतरीन जो हो सकता था वो प्रोवाइड किया। क्योंकि जितने भी लोगों को आपने बुलाया सब लोग सोशियोलॉजी में अपना एक नाम रखते हैं, रिनाउंड पर्सन है सभी लोग, और अपने अपने फील्ड में जिस फील्ड से, जैसे अजय शुक्ला सर इंग्लिश में है, उनको भी मैंने सुना है, वो भी बहुत नॉलेज रखते हैं। कल जैसे आपने उमा मैम का लेक्चर कराया, तो पीपीटी में क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं वो सारी चीजें उन्होंने सिखाई। जबकि हम लोग भागते हैं मैम, फैक्ट यही है कि बनाने से भागते हैं हम लोग, लेकिन जितने इजी वे में उन्होंने सिखाया स्टेप बाय स्टेप कि हम कैसे करें, वो सारी चीजें हमें सीखने को मिली। इसके लिए यही तो थैंक्स टोटल हम लोग प्रयास था कि सारे एस्पेक्ट किसी तरह से इतने कम समय में छू लिए जाएं। यस मैम, तो आप लोगों ने इस चीज को टच किया, आप लोगों ने टच किया। हमें हर वो चीज, जैसे ट्रायंगुलेशन के बारे में नहीं इतना पता था मैम, बिल्कुल भी नहीं था। और कल जब मैम ने ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी वगैरह के बारे में बताया, वो भी मेरे लिए एकदम न्यू ही था। इवन सैम्पलिंग में मैं सोची मैम इतने सालों से सैम्पलिंग पढ़ाती हूँ और मेरा फेवरेट टॉपिक है, लेकिन जब सर ने उस दिन स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग को उसके थ्रू डायग्राम्स के थ्रू समझाया, वो इतने अच्छे तरीके से मुझे समझ में आया कि मुझे मालूम पड़ा कि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी जब नेक्स्ट टाइम बताऊंगी तो इसी तरीके से बता सकती हूँ। बहुत ही अच्छे लेक्चर्स थे मैम, बहुत अच्छे, नो डाउट, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका रहा। थैंक्स अनामिका वंस अगेन। माय प्लेजर मैम। कोई और दुखी भी हो कुछ तो बता दे जो डांट खा गया हो। मनीष जी, मनीष जी थोड़ा सहमा दिए आप, क्या जकड़ लिए थे आप? मनीष जी, ये कहना चाहूंगी कि सबको डांट के भी सबके प्रिय है, ये मैं कहना चाहूंगी जी। और मैडम ऑनलाइन के थ्रू भी बहुत अच्छा आयोजन हुआ, और किसी कमी की बात रही तो आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रही, कोई भी कमी। थैंक्स अ लॉट। नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते जी। नमस्ते मैम। मैम मैं डॉक्टर रावेंद्र कुमार साहू, शासकीय महाविद्यालय सिमरिया, जिला रीवा, मध्य प्रदेश से हूँ। सबसे पहले तो आपको, मनीष जी को और यूजीसी एकेडमिक स्टाफ कॉलेज गोरखपुर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं हो पाया था और अंत में मैंने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किया, और अंतिम तक लग रहा था कि जैसे जुड़ नहीं पाऊंगा क्या, लेकिन मनीष जी के सहयोग से मैं इसमें जुड़ा और प्रयास किया कि पूरे सेशन अटेंड करूं, और अटेंड किया और वीडियो को ऑन करके रखा। एक समय में एक ही काम किया, कोई दूसरा काम नहीं किया। और एक चीज और थी कि जब मैंने देखा कि समाजशास्त्र विभाग द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तो लग रहा था कि मैं हिंदी वाला यहाँ कहाँ से आ गया, लेकिन इतना बढ़िया बाइलिंगुअल सभी
एम वेंकटेश्वर सर ने हिंदी में बहुत अच्छी रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बात की और इतना बेहतरीन कार्यक्रम आयोजित हुआ कि पूरा ये 7 दिन सार्थक हो गए। और मैं आपके यहाँ से 2 ऑफलाइन हिंदी के रिसर्च रिफ्रेशर कोर्स पहले भी कर चुका हूँ। चित्रंजन सर जब हेड हुआ करते थे उस समय कर चुका हूँ, तो इसलिए गोरखपुर से विशेष लगाव था। और जिस तरह से आपने पूरी ऊर्जा से, और लगा ही नहीं कि ये ऑनलाइन था, पूरी तरह से पूरे रिसोर्स पर्सन का समय पे आना, पूरा यूट्यूब पे उसका चलाना और सारी चीजें जिज्ञासाओं का शमन करना, तो ये बहुत ही सुखद रहा। मैम जुड़ चुकी हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस शानदार कार्यक्रम के लिए। जी नमस्ते। मनीष जी। Yes. Madam. Yes. Again, welcome you all in this valedictory session. We all are very fortunate to have Professor R. Indira, former President of Indian Sociological Society, as chief guest in this program. Welcome you, ma'am. हम सभी के बीच HRD सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर रजनीकांत पांडे सर, कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं सोशियोलॉजी प्रोफेसर संगीता पांडे मैम, ऑल डियर पार्टिसिपेंट्स, हमारे विभाग के सीनियर कलीग्स प्रोफेसर कीर्ति पांडे मैम, प्रोफेसर विनोद कुमार श्रीवास्तव सर, प्रोफेसर सुभी धूसिया मैम, प्रोफेसर अंजू मैम, डॉक्टर दीपेंद्र जी, डॉक्टर पवन कुमार जी, डॉक्टर प्रकाश प्रियदर्शी जी, आप सभी का इस कार्यक्रम में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। अतिरिक्त समय न लेते हुए माननीय चीफ गेस्ट मैडम की और डायरेक्टर सर की व्यस्तता को देखते हुए मैं सीधे डायरेक्टर सर से अनुरोध करता हूं, सर आप स्वागत भाषण करें। सर। डॉक्टर मनीष पांडे जी। थैंक यू। UGCHRDC और समाजशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित 60 टर्म कोर्स के समापन सत्र के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर रमाराव इंदिरा जी, समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर संगीता पांडे जी, इस कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर मनीष पांडे जी, डॉक्टर पवन कुमार जी, समाजशास्त्र विभाग के सभी सम्मानित शिक्षक मित्र और इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे सभी प्रतिभागी शिक्षक मित्र। अभी मैं आप लोगों की बात सुन रहा था, जो प्रतिभागी लोग अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, तो मुझे ये लग रहा था कि इस कार्यक्रम में पहले प्रतिभागियों के विचार सुन लेने चाहिए, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि संगीता जी ने और मनीष जी ने और पूरे समाजशास्त्र विभाग ने बहुत ही अच्छे रिसोर्स पर्सन को बुलाया और हमारे प्रतिभागी अपने ज्ञान का विस्तार कर सकें। वास्तव में UGC ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर का कार्य ही यही है। ये सारा कार्यक्रम इसीलिए कराया ही जाता है कि हमारे जो शिक्षक हैं उनको निरंतर नए नए ज्ञानों से परिचित कराया जाए। क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत विस्तार के साथ शिक्षकों को जानकारी देने की आवश्यकता है और निरंतर उनको ये जानकारी ये सेंटर देता रहेगा। तो इस प्रयास में अगर हम थोड़ा भी सफल होते हैं तो मैं मानता हूं कि ये HRDC सेंटर और संबंधित विभाग, जैसे इस समय समाजशास्त्र विभाग ये कार्य कर रहा है, अपने उद्देश्यों में सफल रहा। आज मैं ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि समाजशास्त्र विभाग ने और समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर संगीता पांडे जी ने आपके बीच में एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित किया है जो देश के जाने माने समाजशास्त्री हैं। प्रोफेसर रमाराव इंदिरा जी एक प्रतिष्ठित समाजशास्त्री आप हैं और आपने अपने ज्ञान से केवल
भारतवर्ष को ही नहीं आलोकित किया है, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी आपने अपने ज्ञान के प्रभाव से सबको प्रभावित किया है। आप अपने 42 वर्षों के विश्वविद्यालय यात्रा में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के निदेशक के रूप में, मैसूर विश्वविद्यालय में महिला अध्ययन केंद्र के मानद निर्देशक के रूप में बहुत आपने प्रतिष्ठा अर्जित की। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर आपका बहुत काम रहा है। आप वन प्रबंधन, लड़कियों की शिक्षा, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था में महिलाओं की क्षमता जैसे मुद्दों पर बहुत ही महत्वपूर्ण आपने कार्य किया है और महिलाओं की और लड़कियों की शिक्षा पर आपने बहुत जोर दिया अपने पूरे शैक्षिक यात्रा में। तो निश्चित रूप से आप का पूरा व्यक्तित्व भारत के समाज के उन लोगों के लिए कार्य करना जो लगातार मुख्य धारा में शामिल होने के लिए प्रयत्नशील हैं। सरकारें भी उस दिशा में बहुत ही उपयोगी कार्य कर रही हैं। तो मैं मैडम रमा राव इंदिरा जी का उनके इस शैक्षिक योगदान के कारण बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू सर, धन्यवाद। आपने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और अन्य कई देशों में अपने ज्ञान से विद्यार्थियों को समाजशास्त्रीय परंपरा को आगे बढ़ाया है। आप समाजशास्त्रीय समाज की सचिव भी रही हैं, पूर्व अध्यक्ष भी रही हैं। तो अद्भुत आपका पूरा जीवन है एक अध्यापक के रूप में, और अध्यापक के रूप में बहुत ही अनुकरणीय व्यक्तित्व है। मैं समझता हूं कि आपके इस व्यक्तित्व से न केवल समाजशास्त्र को एक दिशा मिलेगी, बल्कि ऐसे व्यक्तित्वों से जिस समाज में आप जहां रहते हैं उसको भी प्रभावित करते हैं। तो इसलिए मैं संगीता जी को पुनः बधाई देता हूं कि ये जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है और जिसमें 50 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, ऐसे अवसर पर उद्घाटन सत्र में भी बहुत अच्छे व्यक्ति को आपने मुख्य अतिथि बनाया था, और समापन सत्र में भी आपने बहुत ही एक विद्वान समाजशास्त्रीय और खास तौर से एक महिला, हालांकि अब महिला का कोई मामला बनता नहीं है इस देश में, अब ज्ञान का मामला बनता है कि ज्ञान के आधार पर जो भी आगे बढ़ रहा है, और महिलाएं ज्ञान के आधार पर कभी पीछे नहीं रही हैं। ये जरूर है कि आजादी के बाद ये अवसर मिले हैं, तो थोड़ा ये सौभाग्य भी है कि समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष भी महिला हैं और हमारी मुख्य अतिथि भी महिला हैं, और बहुत सारे प्रतिभागी भी हमारे महिला शिक्षिकाएं हैं। तो निश्चित रूप से मैं ये समझता हूं कि पिछले एक सप्ताह में आप लोगों ने जो ज्ञान का आदान प्रदान किया है और रिसर्च मेथोडोलॉजी पर जो नया ज्ञान प्राप्त किया है वो बहुत ही सराहनीय है। और मैं ज्यादा समय न लेकर के मैं माननीय इंदिरा जी का पुनः स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके वक्तव्य से हमारे इन नियुक्त शिक्षकों, नए शिक्षकों के ज्ञान को एक नई दशा मिलेगी। पुनः मैं समाजशास्त्र विभाग को, समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर संगीता पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके प्रति भी सर बहुत बहुत आभार कि आपके मार्गदर्शन में यह आज कार्यक्रम अपनी संपन्न होने की तरफ बढ़ रहा है। एक बार पुनः आपके प्रति धन्यवाद सर। नाउ आई want to call our head and coordinator Professor Sangeeta Pandey ma'am to deliberate about the achievement and report of the program. Over to you ma'am. Thanks Manish ji. सबसे पहले सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। इंदिरा मैडम, डायरेक्टर HRDC, सभी का स्वागत है। पार्टिसिपेंट्स, मेरे फैकल्टी मेंबर्स, I cordially welcome all the dignitaries, faculty members and participants
who are present with us today in this online valedictory session of 7 days duration short-term course on research methodology organized by Sociology Department, DDU Gorakhpur University and HRDC Center, Gorakhpur University, with the purpose and mission to acquaint and refresh the young professors in various areas of research methodology. We organize this program of 7 days as per UGC guidelines. It gives me immense pleasure that our 7 days long academic journey has finally reached its destination of valedictory session. I welcome Honorable Vice Chancellor of DDU Gorakhpur University, Professor Rajesh Singh ji, who in spite of his absence sent best wishes for our program. He couldn't join us because of his meeting with the governor of Uttar Pradesh. We thank him that he promotes such programs and encourages us continuously to organize programs on researches and research methodologies. Whole university is now enthusiastically engaged in such programs. So I thank you, sir. Your wishes are with us. We are already encouraged. Our chief guest today, Professor R. Indra Madam, a renowned sociologist, former president of ISS, is with us. Madam, I welcome you and thank you and appreciate you that you elegantly created some space for us today amidst your very busy prior engagements. Thank you, madam, and welcome, madam. Professor Rajnikant sir, Director HRDC and Founder Vice Chancellor of Siddharth University, Kapilvastu. Thank you, sir, for providing this opportunity to organize a short-term course on research methodology to Sociology Department. You were with us throughout this academic journey, and I hope that Sociology Department organized this course up to your expectations, sir. I welcome my faculty members, all the senior faculty members, Professor Vinod sir, Professor Kirti madam, Professor Shubhi, Professor Anju, Professor Anurag, who helped us in organizing this program in various capacities. I also welcome and thank the young professors of my department, Dr. Manish, for successfully organizing this program, as well as he joined the program in various capacities. He himself is a participant, and the 4 budding professors were participants, as well as they equally helped in technical and all the organizing aspects of the program. Thank you, Professor Dr. Manish, Dr. Pavan, Dr. Deependra ji, and Dr. Prakash. It was your support and coordination that we have reached to this valedictory session successfully. The participants, we had 51 participants who joined the program. As I said, that the participants from my own department, from various other departments of DDU Gorakhpur University, participants from various colleges and universities of Uttar Pradesh, as well as participants of 8 other states were with us.
We had participants from Madhya Pradesh, Maharashtra, Jharkhand, Bihar, Orissa, Himachal Pradesh, Rajasthan, Tamil Nadu, as well as from Delhi also. So the academic deliberations are going to spread across India. I believe this, and I am overwhelmed by this. We tried, because of the interdisciplinary nature of the course, we tried to arrange experts from various disciplines in this course. And we had stalwarts not only from sociology, we had experts from sociology, economics, environment, psychology, Hindi and English literature, maths and statistics as well. 11 lectures on varied aspects of research methodology were arranged, and the experts deliberated on the various areas. We had lectures on the use of data and social science research, शोध की प्रक्रिया कैसी हो, किस तरह से वो सार्थक हो सकती है, review of literature. An organized and elaborate lecture were given by Professor Jagan Karande, and how literature can be reviewed and topic can be selected. We all benefited from it. The important issues in qualitative research was discussed by Professor Pranjal Sharma, who joined us from Dibrugarh University, Assam. Issues in qualitative research was also discussed by Professor Alok Goyal of Economics Department from this university. He elaborated on the sampling method, as Anamika ji told us that I think all the participants might have benefited from it. Test construction and reliability and validity tests by Professor Dhananjay Kumar of Psychology Department was another new arena for the participants. Besides these detailed analysis, we learned about triangulation method, which is nowadays used in interdisciplinary researches. Two areas. Professor Ajay Shukla explained in detail about the ethical issues which concern all the participants, in a research area. So he elaborated on plagiarism, which is prevailing and is a matter of grave concern in research methodology and research areas these days. Besides these very important issues, we discussed in detail at least only two areas we were able to touch. Details in feminist researches, which was elaborated yesterday by Professor Shweta Prasad of VHU, Sociology Department, and environmental research, how to conduct effective environmental researches. Research perspective in water quality management was discussed the very first day of the program by Professor Govind Pandey of MMUT. So we tried to arrange experts from all the fields. As we had varied experts from varied disciplines also. And I think and I hope that our short-term program, which started on 30th March, had 51 young professors across India on this academic
platform, interactive platform. We are able to acquaint them and refresh the knowledge. And we have gained the goal of extending and enriching at least few miles in the area of research methodology. Research methodology का जो ये पथ है बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही बहुआयामी है, बहुत ही सावधानी मांगता है और विभिन्न विशेषज्ञों के अनुभवजन्य ज्ञान से मैं उम्मीद करती हूं कि अवश्य ही आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्षेत्र में जिज्ञासा कुछ नई, क्योंकि ये नीरस भी एक क्षेत्र है, तो कुछ जिज्ञासा बनी रहे, कुछ जिज्ञासा नई उत्पन्न हो, कुछ नई रिसर्चेस हम सावधानी पूर्वक कर सकें, यही एक मुख्य उद्देश्य रहा है। और यदि नवीन शोधों को हम थोड़ा भी मार्गदर्शन इस शॉर्ट टर्म कोर्स के माध्यम से कर सकेंगे तो वो हमारी एक उपलब्धि होगी और मुझे लगता है कि हम अपने लक्ष्य में सफल हो पाए होंगे। With these words, मैं अब वेट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि प्रोफेसर आर इंदिरा was my first choice in the inaugural session as well as today's valedictory session. So we got you, madam, on this valedictory session. We are very privileged. Over to you, Manish ji. Okay, madam. Thank you, ma'am. Thank you for your blessings and inspiring word. और मैम आपने पूरे 7 दिवसीय वर्कशॉप शॉर्ट टर्म कोर्स का असाधारण तरीके से रिपोर्ट दिया और मुझे लगता है कि अगर किसी पार्टिसिपेंट्स का एक आध सेशन ब्रेक भी हुआ होगा तो मुझे लगता है कि सारा निचोड़ आपने प्रस्तुत कर दिया कि किस तरीके से 7 दिन का ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। थैंक यू मैम। नाउ आई वांट टू इनवाइट प्रोफेसर आर इंदिरा मैडम, फॉर्मर प्रेसिडेंट इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी। मैडम, वी आर proud to have you as chief guest. Your academic work have been very influential and inspiring for us. I'm confident that your lecture will be greatly benefited. Very excited to hear you, ma'am. So I request you to please commence your lecture. Over to you, ma'am. Thank you. Can you hear me? Yeah. Namaskar and good afternoon to all of you. Professor Sangeeta Pandey, and Head of the Department of Sociology, DDU Gorakhpur, Professor Rajnikant Pandey, Director of the HRDC, Dr. Manish Pandey, and all my dear colleagues in the department and all participant friends. Well, thank you very much for this opportunity. And Professor Sangeeta Pandey, this is the second time I think that I'm here with you in your program. First of all, I want to congratulate you on continuously, trying to build academic quality by organizing these programs. And when you were talking, I learned that the participants of this program came from different states, and this is really something wonderful. And I think research methodology today is at a very critical stage. And before I commence talking, will not speak for a long time. I also want to remember I should say a dear departed colleague, Professor Manvendra Pratap Singh, who, first invited me to the department when I was president of ISS, and it's very unfortunate that we lost him. But, I have very fond memories of my visit to the department in 2019, and I'm so happy that my association with your department has continued. It was very kind of you to have waited. Actually, I had a commitment. I was at a program, we were organizing a gender sensitization program for students
in one of our postgraduate institutions. So I came from there. Thank you very much. Well, there is something that I want to share with my colleagues here. See, a good teacher, they say, is one who also shares his or her research experiences in the classroom. But often that is not done for various reasons. You know, some teachers are hesitant to talk about their research because it's likely to be, you know, interpreted as promoting oneself. Others, well, may not know how to actually bring this in. In fact, I know of teachers who tried to integrate their research findings with classroom lectures, because sociology is basically about sharing lived experiences of the researcher with the people. But I know some of my own colleagues, when they tried to do that, you know, there is a lot of anti-campaign against them. Oh, you know, this person goes and talks about his research, trying to impress students, etc. Now, I think that this is all very wrong. The time has now come for us to bring our research experiences into teaching. And I'm so happy that Professor Sangeeta Pandey and the department and HRDC are organizing this for the younger faculty, because this is the right kind of, you know, what should I say, approach that they have to cultivate and bring to their teachings. So once again, I want to wish you. And the second thing that I'm very happy about is that you are showing to this world that COVID is no excuse for us not to do creative, innovative programs. Because I know I'm saying this with a lot of sadness and anger also. I have no hesitation in saying that there are people who are trying to excuse themselves from doing creative work by saying, oh, COVID times. No, I would say that organizing programs of this nature, doing research, talking about methodology, they're all matters of passion. If you have the passion in your heart that you should, you know, spread knowledge, create platforms, especially for younger teachers, to meet up with people in their professions, to understand the meaning of interdisciplinarity. This is very good. Now, what should I say about Professor Sangeeta Pandey? She asked me to speak about new trends in research today. Now, I'm of the view that for sociologists in particular, there is a big challenge. And that challenge lies in undertaking micro studies, because, you know, COVID did not have the same kind of impact. What we today in research methodology call as the intersectionality, you know, there were issues of caste, class, gender, location, and access to healthcare, and various other factors which we need to bring into our research. Because today you are talking of rebuilding society in the post-pandemic times. I sincerely hope that the pandemic has gone and it's not going to come back. But definitely we know that there is a great degree of uncertainty that surrounds the pandemic. But I don't think we need to sit and brood about that. Now the challenge before us is, what is our contribution to society? And it's very unfortunate that in many of the committees, you know, which have been constituted, I heard, by state governments, by central governments, there is no representation to sociology. Because generally rebuilding of a society is looked at in economic terms only. It's definitely true that, you know, the two challenges are how to make up for loss of lives and livelihoods. Loss of lives, yes, you know, the way it has happened in a very big way in our country and across the world. But the loss of livelihoods is something that we have to make up for. See, just a few days back, there is a report called Global Inequality Report or World Inequality Report 2022 that has been released. Of course, it is available in the net,
and it's also permitting downloads. So I would request you to, read that. And when you go through that report, you are shocked by the extent of inequality that exists in our society. Well, these are times with lots of contradictions. On the one hand, growth is taking place. On the other hand, inequality is on the rise. And that report also tells us that, the world's wealth, the world's assets are so inequitably distributed that about 10% of the people in this society, they have control over 70+% of the resources. And the poor, cutting across countries, do not even have control over 1 or 2% of this society's wealth. So how do you bridge this gap? And because of COVID, lakhs of jobs have been lost. Unemployment, they say, has increased to about more than by 25 to 30%. And another issue that sociology students, teachers, researchers need to take serious consideration is, you see, there is a process called lapsing back to poverty, which is going on now. So, at least some 30% of the people who had managed to get into lower middle class because they were able to get jobs that gave them reasonably good incomes have now lapsed back into poverty because those jobs are gone. So the impact of COVID is not the same. Of course, when it came to people losing their lives, not finding oxygen cylinders, not having hospital beds in spite of having the capacity to pay for good medical treatment, we all know about that. That is how we lost many of our friends, many of our colleagues. This also has raised certain fundamental questions, in healthcare opportunities. Now, keeping that aside, we see that regions, groups, genders, people with disability, elderly, and sexual minorities, there are certain groups that have borne the brunt of this COVID's impact very harshly. So I think it is for sociology, through its research, micro level, group specific, region specific, to tell what the extent of damage is, so that it influences policy. It's very, very sad that sociology's visibility in policy is very limited. Because, even today, I don't understand this. People don't understand that sociology can make a big difference. Because we are the group that can identify the nature of inequality through our research and tell certain very, very minute and very sensitive truths, which many others may not be able to say. So the first challenge for our research is that we have to make ourselves visible. How do you do that? Write about it. Please talk about it. Let us write in any language. The best way is to write in our own language. I do a lot of my writing in my language, Kannada, because you see, ultimately sociology should come into public domain. It should come into the public level. It should reach people. And we should tell the truth about what is happening around us. Now, yesterday I was at a lecture, by Professor Mary John, and she brought out 1 or 2 points I thought which are very relevant, which I want to share with you. So she was giving data about how women's representation in higher education increased from 10% during independence to 50% today, which is a real achievement. But if you look at the participation of women in the country's labor force, it hasn't seen much of a rise at all.
COVID, because of COVID-induced lockdowns and loss of lives, due to COVID, and also loss of livelihoods, you see that women's labor force participation today is only about 16%. So how do you understand this phenomenon? On the one hand, you have girls, their participation increasing at every level of education. On the other hand, where are all these educated women going? Is that increase translating itself into action? Or are they still bogged down by, all those patriarchal values, etc.? Now, this is the kind of research which sociology must do. All research need not be macro, or all research need not be only in the context of a theory. Today, I think the need of the hour is to undertake small studies, particular region, particular city, particular group of villages, particular groups, which I'm sure sociologists can do very well, and share these findings, not only in the classroom, but policymakers, and academicians, those who are influencing decisions at different government levels. So the challenge for sociological research lies in identifying topics of contemporary relevance. There is a lot of sociological research which is repetitive. I'm not saying that it is unimportant, but now the challenge for us is to identify new themes. As I said, this is the time for us to come out of those boxes. What they call as out-of-box thinking must be done in research. I don't think now we can go on giving the excuse. Yeah, it was difficult, I agree. That during the times of the pandemic, it was difficult to do field work. But now, the field is just around us. One need not go to distant locales to do research. Even around us, there are lots of challenges that are being thrown up. And the education system itself is the best example. What is happening in education? There are those people, there are those teachers who have permanent jobs, who have comfortable positions. And there is a large group of people in this country, especially those in the government service, whose lives were not so disturbed because of COVID. But within the academic world itself, there are people, teachers who are contract teachers, who have not got salaries for so many months. And there are students. You see, we simply talked as if that shift from offline to online mode was very easy. So what? People said, conduct online classes. You will see, does everybody have access to those Android telephones? This is nothing new, I am saying. Now there are researchers showing, especially talking about women, gender discrimination. There is a rural-urban gap where 40% do not have access to mobile telephones which can help them access classes. And with all those issues of network, lack of connectivity, lack of money to buy phones, how do you rebuild the education system? And the most shocking thing is child marriages, early marriages have increased quite a lot. In a Mysore district itself, if I can tell you, between 2019 and 2020, the identified cases only I am talking about, those without being reported are happening. The number of child marriages is identified by Department of Women and Child Development was only about 220. But in 1 year, after the pandemic broke down lives, that number increased to 200. Now, what do you do with all these girls? You see, sociology, I think, has the challenge of finding out the invisible people.
invisible among the poor, invisible among the vulnerable, marginalized groups who have never come into the scanner of development. So how do we bring all these girls back to school? How do you save them from these illegal marriages? And many boys, I mean, it's not only with reference to girl children, even many of the boys have lost their opportunities and aspirations because schools closed. And there is such a close truth that because of the stoppage of midday meals due to the closure of schools, more girls than boys stopped attending school because hunger was in many families across the country is a more challenging issue for girl children than for their male counterparts. But many of these issues are not coming to public domain at all. So it is for sociology, if I may say, to do research on these topics. Go on searching, because for me, sociological research is about an endless search for those truths that do not come into the open. And if we don't speak, who else will? See, I'm also very sadly sharing with you that in many institutions, sociology courses are closing down because, there is a feeling that there's a fear that jobs will not be available. So now I think we have to make ourselves and our discipline relevant in this society. And also, the challenge for sociological research now is to look at those areas where new employment opportunities are coming. There is something called, there is recently, again, something called as India Skills Report was released, 22, India Skills Report. And what was shocking was that the people who prepared this report, they were meeting future employers. They, of course, most of them were from the corporate world. They met academicians. They met people, who were involved in this whole process of training, of creating skills, and also those people who used those skills. Now, shockingly, that report revealed that nearly 52% of the youth don't have the skills required for getting jobs. Now, what are these jobs? They are called the new jobs. And today, you are talking of new skills. And new research skills are also to be built by us. I'm not undermining the importance of teaching traditional research methodology. Yes, it is necessary. But you just can't go by, steps. You have to, first, we have to start from telling our students, how do you identify a research problem? Is it something around you? Is it something close to your heart? Is it something that's happening right outside your habitat? So you see, we have to now, I suppose, look at research as well as teaching in the context of the new jobs that have been identified. The World Economic Forum, a couple of months back, again released a report called The Future Jobs, which is really, all these are available online. We can get all these online. So there is no problem locating those reports, though they are quite voluminous. So I think for us now, it is important to see what are these new jobs. They are there in media, they are there in the health sector. Of course, many of them are in the computer world. So now for us, you have to take those jobs. If we read the executive summary of that report by the World Economic Forum, you will see that there are some 8-12 jobs that have been identified as jobs for the future. You see, COVID itself created some new sets of jobs. And definitely sociology is one of the disciplines
that has been identified as building the skills required for rebuilding our society. But the challenge before us is to create those skills. And also there is a lot of data, you know, I was listening to Professor Sangeeta Pandey, and I'm sure that in your 7-day program, there has been a reference made to this. They are talking about data. But today you see, they're talking about big data, large data. How do you access that? How do you analyze that? All right, we said it's COVID, so I cannot go for field study. But nothing prevents us from accessing data that are available in the online mode. So how to segregate that data, how to use that data for building research skills of our students and also ourselves. These are, I think, now things which we should start thinking about in the new research environment that needs to be created. See, the very fact that such courses are being organized and you know, all young people and seniors, faculty are all getting together is itself a very positive development. And before I close, there is one last thing I want to say. I think we have to admit that one of the weakest linkages in research today is writing. Let's write in any language. It is not the issue. But our skills of writing research must be honed. They must be built. You see, I remember my teacher telling me, you may teach in a methodology class that report writing is the last and final stage of research. But he told me, no, don't go by that. He said you should write from day one. Write and write and write. Because writing is a skill. And now we are realizing, we will soon realize that one of the demands of the new jobs which are created by the pandemic or in the post-pandemic period, whatever you want to call that, is documentation. So we must document and not document in a big way, but look at the available data. And you can reach out to anybody today because of social media. So create information. Talk of what is there, how you use that to decide what needs to be done. So one of the challenges for us sociology teachers, sociology researchers is to hone up writing skills. That is why, I will say the Indian Sociological Society has decided that it will support the organization of academic writing workshops. And I'm sure, with the kind of work that you are doing, with the kind of initiative that you have taken, you must now also think of organizing one of those programs in collaboration with the ISS, and then involve younger teachers, faculty, whoever is interested, and get people from different backgrounds to tell how we should write, because writing is not an easy task. Whatever I said, the medium of our writing may be. So language, content, and the capacity to convey what you want to convey. So today, you see, I would end by saying research needs to go on a new path. We know enough about various things, but if you talk of theory, they will say, tell us how this can be applied in real life. I know students are asking today, BA as well as masters. Okay, I am here for 3 years. Afterwards, what will happen? How will I use this 3 years knowledge of sociology or 2 years knowledge of sociology to better my life chances? So it is in that context
and the context of the new jobs. I have already talked to you about the Future Jobs Report, the India Skills Report, and the Global Poverty, the Global Inequality Report. All of these are new documents. And World Bank and many of these organizations in India also are coming out with reports, on how the pandemic has affected our society. And so how, we can train, we can equip ourselves and our students to build a better tomorrow, to build a better sociological world. That is what I think is very important today for all of us to think about. I hope I have said something that, is meaningful. Thank you very much for inviting me and giving me this opportunity. And it's always a pleasure to be with you and keep this contact alive. Thank you very much. Namaskar. Thank you so much, ma'am, for your lecture. आपका वास्ट एक्सपीरियंस रिसर्च और एकेडमिक्स को लेकर के है, उसका लाभ हम सभी के प्रतिभागियों को प्राप्त हुआ। और आपने मैम बिल्कुल जो सही बात कही कि सोशियोलॉजी शुड बी कम इनटू द पब्लिक डोमेन और हाउ वी कैन अप्लाइड इन रियल लाइफ। हमें रिसर्च का ये उद्देश्य होना चाहिए कि कैसे हम इसको समाज के लिए उपयोगी बनाएं, अपने लाइफ चांसेस को बढ़ाने के लिए कैसा उपयोग करें। तो मैम मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपना समय दिया और हम सभी का मार्गदर्शन किया। थैंक यू सो मच मैम। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर पवन कुमार जी फॉर फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स। ओवर टू यू। Thank you, Manish ji, and thank you, ma'am, for giving me this opportunity. On behalf of UGCHRDC and Department of Sociology, Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University, Gorakhpur, I would like to express my sincere thanks and gratitude to our respected chief guest, Professor R. Indra ma'am, for her kind presence in this program and her blessings in the form of an enlightening lecture. Thank you so much, ma'am. Thank you. The pleasure is mine. Thank you, ma'am. Further, I would like to thank our Honorable Vice Chancellor, Professor Rajesh Singh, sir. Sir, your dynamic and visionary leadership is leading our university to a new height. Thank you so much, sir, for your kind interest in research methodology programs and your blessings. Further, in this sequence, I would like to thank the Director, UGCHRDC, Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University, Gorakhpur, Professor Rajnikant Pandey, sir. Sir, under your efficient leadership, our sociology department completed this short-term course very successfully. Thank you so much, sir. Now, I would like to express my sincere gratitude and thank to the coordinator of this short-term course and our respected head of the department, Professor Sangeeta Pandey ma'am, for her tireless effort in making a good academic discourse and successful completion of this program. Ma'am, I personally would like to thank you because I think I could listen many renowned scholars from across the India and be benefited by their knowledge and approach only because of your permission to take part in this program and only because of your visionary approach to gather so much, to gather such renowned scholars at one single platform. Thank you so much, ma'am. Further, I would like to thank all the respected participants of this program who are participating from different parts of India. The participants are the strength of any program, and you all actively participated, and your dialogue and discourses made this program a grand success. Thank you so much. Now I would like to thank all the colleagues of the department whose presence and cooperation for this program provided the needed strength to us. Thank you so much. Further, I would also like to thank the supporting staff of UGCHRDC and Department of Sociology, especially Mr. Sudhakar Mishra ji. You remained behind the curtain
and significantly contributed in the success of this program. Thank you so much. Last but not least, I would like to thank all the media persons for their media coverages and very effectively and accurately reporting of the events. Thank you all. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you all. Thank you, Dr. Pawan जी. मनीष जी. Yes, ma'am. जी. हाँ, एक और इस कोर्स की एक और खासियत जो बता दी जाए सबको कि ये कोर्स केवल पार्टिसिपेंट तक ही सीमित नहीं रहा. एक दो दिन पहले हम लोगों ने इसको अपने स्टूडेंट्स तक भी लाइव किया और उनको भी पार्टिसिपेट किया, और ये एक अच्छा प्रयास था कि रिसर्चेस और रिसर्च की प्रविधि कैसे मासेस तक, सोसाइटी तक पहुंचे. थैंक्स जी. और मैम, चूंकि हमारे रिसर्च स्कॉलर्स के लिए भी ये टॉपिक बहुत रेलेवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट था, तो जैसा कि आपका डायरेक्शन था जी, इसमें डॉक्टर पवन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और दीपेंद्र जी, जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया. और उसको मैम सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के यूट्यूब चैनल पर सारे लेक्चर्स अपलोड किए गए हैं, जहां से हमारे बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर उसको लाइव उसका वीडियो देख सकते हैं, और लाइव भी उसको देखा जा रहा था जी. तो अब हम सभी लोग इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि सारे लोग, हम सभी लोग जो यहाँ मिले हैं, वो चूंकि हम लोग सभी लोग एक ही प्लेटफॉर्म एकेडमिक्स में हैं, तो सब लोग एक दूसरे से फ्यूचर में भी एक दूसरे से मिलते रहेंगे, एक दूसरे के साथ नॉलेज अपना शेयर करते रहेंगे, और इसी तरीके से हम लोग आगे के लिए कार्यक्रम में मिलते हैं. थैंक यू ऑल. Okay, thank you. Thank you so much. Can I, with your permission, leave? There's also this program now of Orissa Sociological Association right now. So okay, ma'am. Thanks very much. Thank you. Thank you, Dr. Pandey ji, and then to everybody, all my colleagues here. Thank you very much. Thank you. Thank you. Okay, thank you. तो अब मैडम, अगर प्रोग्राम को आवाज म्यूट हो गई, कोई बोल नहीं रहा है क्या? नहीं जा रही क्या मेरी? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है. आ रही है मनीष जी, आवाज आ रही है आपकी. हाँ, तो ठीक, फिर हम लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पर आगे मिलते रहते हैं. बिल्कुल. अब आज का ये प्लेटफॉर्म यहीं पर ये पड़ाव बंद हुआ. नेक्स्ट हम लोग फिर ग्रुप में हम लोग रहेंगे ही. ग्रुप को हम क्लोज नहीं करेंगे, ग्रुप को वो हमारा चलता रहेगा कुछ दिनों तक, और बाकी आप सभी के सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन भेज दिए जाएंगे. उसके अलावा आप लोग थोड़ा सा खुद परसुएट करके, हाँ, ऑफलाइन भी मंगा लेंगे हम लोग उसको. आपका साउंड चला गया मनीष जी. ओके, थैंक यू ऑल. ओके, थैंक यू संगीता मैम, थैंक यू सर, मनीष. थैंक यू. धन्यवाद सर. हम लोग भी ग्रुप लिंक करें क्या? रूपा दिख रही है मुझे. हेलो.
आई थिंक सर की तरफ से हम लोगों हाँ, को परमिशन मिल गई है, हाँ वी कैन लीव। हाँ, लीव कर सकते हैं। मैम वी कैन लीव। सभी को नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर रूपा। नमस्ते डॉक्टर नीलिमा मैम। नमस्ते मैम। मैम ऑफिशियल लग रहा है, अनाउंसमेंट हो गया है तो अब लीव कर सकते अभी हैं। हम कर रहे हैं, आप देखिए, हम ग्रुप लीव कर रहे हैं। अभी कुछ होगा तो ग्रुप में बातचीत करेंगे। ओके मैम, थैंक हम संपर्क में रहेंगे। किसी के यहाँ भी कुछ कोर्सेज वगैरह होंगे, कोई सेमिनार वर्कशॉप होगा तो हम ग्रुप में डालेंगे ताकि सभी लोग जुड़ पाए। जी जी मैम। हाँ, ये ग्रुप बना रहे और ये जो ग्रुप है उसी में उसी को कायम रखेंगे। जी 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 मैम, इसी को कायम रखेंगे ताकि हमको नया ना बनाना पड़े। यहाँ जी बॉम्बे में कुछ होगा तो मैं उसमें पोस्ट करूंगी। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आपके यहाँ होगा तो आप कीजिएगा। जी मैम। ठीक है, ओके, धन्यवाद। ओके मैडम। ओके मैम, धन्यवाद मैडम।